Let's go. Nice. Hmm. So let's get started. I hope I am visible and audible. Audible? Hello. Okay, okay. So finally we are back after a long break and we will continue from day number 35. Let's make a folder for it. Finish WC. Just let's on this one minute. Hello, am I audible? Guys, if you're watching लाइव चैट में एक मैसेज कर दो कि मेरी आवाज आ रही है सो ओके लेटेंसी काफी कम है Hmm. So if you guys are new here, my name is Harshit and currently I'm in final year of my BTech. Okay, but most of you might be my subscribers. You guys might know what I've been going through. And I had started this series of 45 days of code challenge where I was solving 455 DSA problems in Striver's A to Z sheet in 45 days. But I could not continue after day number 35 because I was appearing for some interviews and assessments in my on-campus placements, which does not really ask those difficult concepts that are remaining in the series. So that is why I had paused the series. Okay. And after 20 days, almost to 20 days, we are starting again and we will continue our series in which we had already solved around 200 problems in 35 days, around 35 days. And we will be continuing from stack and queues in which I had already solved the prefix and infix problems. That was step number 9. And if you guys are watching, please tell me if my voice is clear or not. And then we will start solving questions. Although you guys might not be interested, but I had to do because I put this challenge and I need to complete it. And let's revise some concepts of stack and queues that we had already done in day 33 and 34. Mm, Start.java. 3 minutes for what? Screen start होने को 3 minutes remaining. Okay, let's wait. But I know that not many people will join us because I'm starting after so many days. So we should start already, right, SG Bhav? So should I revise all the concepts? I don't think so. It feels so new.
after 20 days. एक दिन और skip करता तो मुझे आदत हो जाती stream ना करने की. So, learning. The first question was implement stack using arrays, and this is the program that we are using. And stack is just a linear data structure in which we last in first out होता है, right? मेरी आवाज सुनने की जरूरत नहीं आती. So we had implemented this solution for implementing stack using arrays. In this file VS Code, we created a class myStack and array and two variables top and size. Top stores the index for the top variable, right? And size stores the size of the stack. And then this is a constructor which creates a stack of given size in which it creates an array of given size. And initially top is set as -1, that is the stack is empty. And then we have created a method to check if the stack is empty. So if top is equals to -1 that our constructor has initially created, that means our stack is empty, right? Otherwise it will become false. Sorted is full method which checks if the stack is full. Push method which inserts an object or data in the stack. First it will check if the stack is full, and stack is full when okay, let's get started. As you guys saying it's 8 p.m. now, but I had started few minutes earlier from time. But okay, peak method, display method, print method, these were the methods that we had implemented using array, the method of stacks using array. And then there should be another. Okay, we had created a guide for learning implementation of stack using queue. Mm, what is a queue? Queue is the first in, first out data structure, last in, last out. Okay. Thank you, Deque. Front peak, rear axis is empty, is full size. Mm, okay. क्यू का भी एरे इम्प्लीमेंटेशन किया. ओके. स्टैक आई थिंक क्यू और स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन चैट जीपीटी कर दिया था. Should I do that again? I don't think so. तो ये रहा simple queue Java implementation. You will create an array, two variables front and rear, then capacity and size, and the constructor will create a simple queue with the given capacity and create an array of the given size, that is capacity. Front will be pointing to -1, that means the queue is empty initially, size is 0, and then enqueue operation inserts an element or data in the queue. First it will check if the queue is full. If it is not full, it will insert a new element. ओके, इसमें दो चीजें चेक करनी रहेगी. इज फुल, अगर फुल होगा तो इट विल return without inserting anything, and then it will check for if the queue is empty. If it is empty, it will update the front as 0 and increment the rear element and add the element to the queue. Okay, deque operation removes an element from the queue
It will first check if the queue is empty. If it is empty, it cannot remove. It will give underflow errors, and then it will store the front element in the remove variable. And if it was the last element, Q will be set to -1 front and where will point to -1. That means the Q is empty. Front or peak operation with the front element without removing. Okay, front and peak means uh, getting the element in the front of the queue without actually removing it. And then rear operation will return the rear element without removing it, right? Check if the queue is empty, same is empty method. Check if queue is full method. Okay, current size of the queue will return by size method. Display all elements. Public void display. If empty, it will return empty. Otherwise, using a for loop, we will return all the elements of the queue. Okay, I got it. We revised it. I think I had studied about queues, but not circular queues. Circular queue implementation using array and testing queue implementations. Okay, all the operations are 10 complexity of 1, bigger of 1. Space complexity, queue versus stack, first in, first out, last in, first out, where only insertion, in where only it insertion top, deletion from front only. Okay, first in, first out, front वाला पहले निकलेगा, rear वाला insert होगा, and in stack we can only remove from one end. Access, we can access the elements from front and rear, but in stack we can access the elements from the top only. Real world scenario, ticket line and plates used in DFS scheduling, DFS recursion. Okay, breadth first search. Okay, 2 pointers we need in queue, 1 pointer we need in stack, common key problems and solution. Implement queue using stack. Stack का use करके okay, we will use two stacks to implement queue. We had done this problem already. I think this is problem number 4. Implement queue using stack. And let's review it. How to do that? We will create two stacks, stack 1 and stack 2. One stack will just copy all the elements, right? Public queue using stack. Okay, the class name is queue using stack. And we created two stacks, stack 1 and stack 2. First stack is for MQ, second stack is for DQ. And okay, java.util.stack. Yeah, अच्छा I did not know about it. Java.util.stack. Okay. And for the MQ operation, we will just insert the element in the stack 1. Done. For DQ, transfer from stack 1 to stack 2 when stack 2 is empty. Okay, while if stack 2 is empty, transfer all the elements from stack 1 to stack 2. That will reverse all the elements of the stack, and the top will be pointing to the first element it inserted. That means the front element of the queue, and it will return it. Okay, and if stack 2 is empty, return queue is empty. Otherwise, return stack 2 dot pop. Okay, got it. Problem number 2, implement stack using queue. Same method, we will use two queues to implement stack. First queue will store the elements.
and stack queues. Okay, let's see. Push method, we will add the element to Q2 directly, and then we will transfer all the elements from Q1 to Q2. What does it mean? We created two stacks, not stacks, two linked lists. This example, we created two queues, Q1 and Q2, and the constructor created two linked lists for the queue. Okay, and for the push operation, we added the element to Q2, that is a list or a queue, and we transfer all the elements from Q1 to Q2. What does that mean? We are implementing stack. Okay, and then we swap Q1 and Q2 at last. Not very good. Then the problem is to reverse the elements of a queue. First is using stack, another is using recursion. This problem is not listed in the driver's sheet. Let's solve this problem. First non-repeating character in a string. Then we solve this. And then advanced key concepts. We will do these later. Q overflow and underflow triangle. These are so advanced concepts. It was just full user panel and don't also table Q using step. Okay, there are two methods to implement Q using stacks. MQ costly जिसमें MQ करना difficult होगा if we are inserting the elements first. Mm, Add element to queue rear. Strategy transfer all to stack की push में transfer practice. Step 1. Okay. It is simple, but इसमें NQ operation will be costlier. पहले हम first stack में जितने भी elements होंगे उनको second stack में transfer कर देंगे and then we will insert the new element in stack 1 and reverse the operation. जो second stack के अंदर जितने भी elements होंगे उनको वापस stack 1 में transfer कर देंगे तो जो नया element insert हुआ वो last में insert होगा. It's like placing plates, right? And the second method is Deque costlier. That means we will only transfer when stack 2 is empty. Simply just push to stack 1 and when we need to remove, we will remove all the elements. We only transfer when stack 2 becomes empty. That this means each element is transferred at most once, giving amortize. Okay. Input and output and Q push to stack 1 and Q push to stack 1. 20 will be on top and Q 30, 30 will be on the top. So, so
fine. Let's continue. So we will keep pushing the elements in the stack 1, and when we do the Deque operation, stack is empty, so we will transfer all the elements from stack 1 to stack 2. So pop 30 from stack 1 push to stack 2, it will reverse all the elements of the stack, and then we will start removing elements from stack 2 one by one. Okay, not empty, so directly pop from stack 2. Okay, TQ stack 2 is not empty, so directly pop from stack 2. Got it. This is a good method. Okay, I revised both the methods to implement queue using stack, and both uses two stacks. Okay, so we are done with stack using array, queue using array, stack using queue, queue using stack, and stack using linked list that is remaining to revise. Queue using array, queue using stack, stack using array is done, stack using queue is here. Third, the most efficient approach. Three, waiting for what? As to okay, if we are using two queues to implement stack, what we need to do when pushing an element, add it to queue 2, move all the elements from queue 1 to queue 2, and then set queue 1 and queue 2. Okay, when we are pushing a new element, we will add it to queue 2, and then move all the elements from queue 1 to queue 2, and then swap it. Okay. When popping, simply remove from queue 1. Okay. If we are okay, mm, when we push 10, it will insert it to Q2, move all the elements from Q1 to Q2, nothing to move, swap Q1 and Q2, then Q1 will become Q2. And then when we push Q2, it will add it to Q, sorry, when we push 20, it will add it to the second queue, that is Q2, and then insert the element that is 10 to Q2. 20 is at front, 10 is at rear, and then it will swap Q1 and Q2. Okay, simple method. But what is the disadvantage? Push costly, इसमें elements को push करना costly हो जाता है, and what are the implementation actual created two Q1 and Q2. Two queues are created using linked list, and Q2.add. Step 2, move all the elements from Q1 to Q2, and then swap Q1 and Q2. Simple swapping method. हेलो वैभव सर, बीजेएमआई नहीं खेल रहे आज? वेलकम वेलकम वेलकम. पॉप ऑपरेशन फाइनली डे 35 स्टार्ट हो गया. आई होप आई विल बी कंसिस्टेंट फ्रॉम टुडे. ज्वाइनिंग कब आ रही है सर? ओके.
pop operation के लिए it will just be moved from Q1 until it's empty, and we will store it in a variable named QMove. Top operation will be the top element. Okay, okay. Two queues, pop costly, and then single queue वाला क्या है? One queue. Stack using one queue. What is the process of doing so? Most efficient. When pushing a new element X, add X to the queue. It goes to there. Okay, SG bro. See you then. Remove and re-add all the previous elements. Size -1. And this brings X to the front. Hmm. ये सबसे efficient method है तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं. Hmm. What we are doing, we are implementing stack using queue, a single queue. So in stack, what we do, suppose this is a stack in which we can insert elements one over other. And then we have a queue. Queue is like a line. ऐसे तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा. क्यू में जो पहले आएगा वही पहले जाएगा. And we need to implement stack using a single queue efficiently. So let's whatever. So when we are inserting in a stack, it gets inserted on the top of the previous element, and when we are removing, it will remove from the top. And we need to do the same, but in queue, what happens? The element inserted first is removed first. So अगर हमने first one को पहले insert किया था, तो one पहले remove होगा. And अगर हम किसी को push कर रहे हैं, तो it will be inserted at the end of the queue or rear of the queue. So using the properties of a queue, we need to implement a stack. That means अगर हमने 6 को लास्ट में इंसर्ट किया है तो 6 ही रिटर्न होना चाहिए. So
what we can do, suppose we have a queue and we have inserted an element, it, it gets inserted to the rear. Suppose it already had two elements, 1 and 2, and we are inserting 3. So it will get inserted at the rear index. And then what we will do, we will remove all the elements and add back to it. That means it will, okay ठीक है, मतलब जहाँ पे हमने इसको इंसर्ट किया है ना उससे के साइज को -1 करके उतने टाइम्स हम इनको इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव एंड इंसर्ट कर देंगे. सो सपोज ड्राई रन करके बताता हूँ. We took Q and let's say yeah, it's not very much of the whole ship. What the hell? So suppose this is the front of the queue. Let's say this is the front of the queue. Let's call it F. And this is the rear. Rear will be updated according to the number of elements. So let's say we have inserted 1 as the first element as the queue was empty. So it will remain at the front of the queue. And then let's say we inserted 2, it will be inserted like when we inserted 1, the front and rear both will be pointing to the first index only. Okay? Front and rear both are pointing to the first index and the first element. Okay. And then if we are inserting, suppose मतलब suppose क्या करना है, हमें stack ही implement करना है ना एक क्यू का यूज करके. तो लेट से अब 1 को तो इंसर्ट कर दिया तो एक ही एलिमेंट है, एक ही रिमूव होगा, फ्रंट पे बैक पे सब वही है, टॉप भी वही है, बॉटम भी वही है, फ्रंट भी वही है, रेयर भी वही है. बट व्हेन वी आर इंसर्टिंग 2, it it will update the rear with +1, then the rear will be pointing here, r is rear, and the 2 will be inserted at the rear on the first index of the array. And now to implement stack using this queue, what we will do, we will remove all the elements and insert back up to size -1. मतलब अभी करंट में साइज इसका क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल. साइज विल बिकम 1. अच्छा एक गलत पॉइंट तो बता रहा हूँ लेकिन बताना तो पूरा पड़ेगा. तो जैसे कि अगर 2 को इंसर्ट किया और इसको स्टैक में कन्वर्ट करना है तो व्हाट वी विल डू, वी विल रिमूव ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट दैट एंड इंसर्ट बैक. तो क्या होगा कि हम जो फर्स्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर देंगे. कैसे करेंगे, इसको उठा के यहाँ से हटा देंगे और फिर से इंसर्ट कर देंगे तो ये इसके पीछे आ जाएगा. गेटिंग. और इट विल बिकम द रेयर एलिमेंट ऑफ द क्यू एंड जो एलिमेंट हमने इंसर्ट किया वो हमारा फ्रंट बन जाएगा. गेटिंग. और ये हमारा क्यू एक्ट करेगा एज अ स्टैक. और इसके बाद में जैसे वी विल इंसर्ट 3 नेक्स्ट, जब हम 3 को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे तो व्हाट वी विल डू, वी विल again remove all the remaining elements of the queue and insert back. So कैसे करेंगे, we will take the front element from the queue and insert it back, and again take the front element and insert it back to the queue, and the rear will be pointing to 1 and front will be pointing to the element that we have inserted, right? So in this way it will act as a stack, right? और एक्चुअली ऐसा भी नहीं होगा, फ्रंट एंड रियर के ऑलमोस्ट वही रहेंगे. इट इज जस्ट के व्हेन वी इंसर्ट
2, it will only swap these numbers. दैट मीन्स 1 को रिमूव किया तो 2 यहाँ पे फ्रंट पे आ जाएगा और 1 रियर पे आ जाएगा. एंड व्हेन वी इंसर्ट 3, तो पहले 2 रिमूव होगा और 2 की जगह 1 आएगा, 1 की जगह 3 आएगा, 3 की जगह 2 आएगा. And in same manner, 1 will be removed and 3 will take place of 1, 2 will take place of 3, and 1 will take place of 2. In this way, we will implement stack, and when we need to remove the element from the top, it will only remove the front element. That is it. It is that simple. Let's do this by implementing stack using few. Where is the problem statement? Implementing stack using queue. Solve तो क्या होगा वैसे? खुल जा सिम सिम. Okay, we have already done that. जैसे को रिव्यू कर देते हैं. ठीक है. Your my stack object will be instantiated and called as such. My jack is equals to my stack object dot push x parameter 1, 2, and 3 will be there. Okay, so we created my stack and created two. अभी हमें क्या करना है? सिंगल क्यू का यूज करके इस सेम स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है. अभी पहले इसको रन करके देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है. इट इज यूजिंग टू क्यूज. ओके, we will solve it using one queue only. Dhruv Gaur is back. Hello bro. Hello Dhruv, how are you? Submission देखते हैं. Last submission है ही नहीं. Why there is no data? Run करके देखते हैं. अननोन नेटवर्क एरर, लॉगिन नहीं है क्योंकि. लीड कोड की वेबसाइट फिर से डाउन है क्या? अरे प्रद्युमन उपाध्याय जी, आप भी यहीं हैं. वेलकम बैक सर. वॉइस बहुत लो है भाई. अभी कैसी है? अभी क्लियर है क्या? यार मेरे. हेलो. यार मेरे को तो क्लियर आ रही है. मेरे एयरफोन में तो क्लियर आवाज आ रही है और लाइक लाउड एंड क्लियर है. अभी ठीक आ रही है क्या? मैं धीमे बोल रहा था शायद. अब बेटर है. मैंने रिड्यूस किया थोड़ा सा वॉल्यूम. हाँ, हो सकती है लेकिन वो डिस्टॉर्ट होने लगती है. आवाज की क्वालिटी बिगड़ जाती है. देखो अभी ज्यादा आ रही होगी. ध्रुव इज आस्किंग विच. Bro, which language is best for DSA? Bro, you can do DSA in Java if you want to learn web development also in Java, like Spring Boot. But if you want to go into competitive programming contest, you can learn C++. Okay, Chinese language. Sanskrit best है भाई. Learn Sanskrit.
ओके व्हाट वी वर डूइंग पहले सबमिशन चेक करते हैं एक सबमिशन था 0 मिली सेकेंड एंड इट वाज ऑलरेडी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट बट वी हैव much better solution so let's try that. Rahul Bist is back. Hello Rahul, how are you? This boy is watching our live stream from the day one. He's the first subscriber, I would say. How is it going, bro? I'm back after 20 days. Okay, let's implement the same stack using a single queue. We had implemented it using two queues, but we will use a single queue. So let's delete this queue too and this private queue too also. And then when we are inserting, Rahul is saying बहुत दिनों बाद आए. Yes, bro. After 21 days. I मतलब regular series तो 20 days के बाद ही हुई है. But it's been around 14-15 days. Okay. Q2 की जगह Q1 will insert and then we are pushing size. We will create a variable named size and when a new tag is created, the size will be equal to 0. And when we insert an element, it will update the size. So size plus plus. Okay. And then you Q1 is set. इसके बताते हैं. Dhruv is asking what about DS in Python? You can do Python also if you are like learning data science concepts, machine learning, and you are more into AI/ML. You can learn Python and learn data structures in Python as well. It's a good option if you are more into AI/ML, then only. But only if you are also doing AI/ML in Python. Okay. ये क्या यूजर नेम है ब्रो? Hi, bro. Student, which year, bro? I'm in final year, preparing for my placements, and I started USA lately. I'm late. राहुल बिस्ट सिंह भाई कौन सा प्रॉब्लम है ये? प्लेसमेंट्स का क्या हुआ ब्रो? आई हैड अपेयर्ड इन सम इंटरव्यूज, कुछ अच्छे गए कुछ बहुत बुरे गए एंड रिजल्ट्स आर स्टिल पेंडिंग. जो बुरे गए उनका तो अंदाजा है कि आई एम रिजेक्टेड ऑलरेडी, बट कुछ अच्छे गए हैं तो उनका रिजल्ट आना बाकी है. तो लेट्स वेट. And those were like average companies, like service based companies. So अगर हो भी जाती है तो we should work more harder for better companies, right? That is why I'm back. And let's get back to the problem. What I was doing, I was converting this two queue implementation of stack into one queue. That is efficient. So what was the method? First, we will insert the element and then we will remove all the remaining elements from the queue and insert back. Q1 dot add and pop pop returns the removed element, right? While q1 is not empty, q2 dot add q1, तो इसको q2 की जगह q1 कर देंगे. Simple. So it will return.
बट इसमें इज एम्प्टी की जगह ध्रुव इस जो आपका दूसरा का पास था उसका क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन दूसरा का पास? Kunal Bang is here. You're welcome, bro. He's saying, hi, bhai. I hope you remember me. Your information regarding Capgemini helped me, and I had my interview on 13th October. Was pure HR though. Waiting for the results. Thank you. You're welcome, bro. Thank you for joining and updating. I'm also waiting for that same interview. मेरा भी बहुत अच्छा गया था. So I'm confident about it, but still preparing for, okay, Dashera. ओके HSPC LTI माइंट्री ब्रो आफ्टर दिवाली जितने भी असेसमेंट्स और इंटरव्यूज थे वो थोड़े हार्ड हार्ड नहीं थे यार लाइक आई गॉट अनलकी इन दोज इंटरव्यूज लेट मी शेयर यू वन इंसिडेंट ओ नीरज नीरज इज हियर वेलकम नीरज ब्रो हाउ आर यू LTI माइंट्री का इंटरव्यू कैसा रहा था ना तेरा कुणाल बैंग इज सेइंग ZS एसोसिएट्स आती है क्या ऑन कैंपस ब्रो आई डोंट थिंक इफ यू ZS एसोसिएट्स करके तो कोई कंपनी नहीं आई हमारे कॉलेज में अभी बट जेड स्केलर आती थी आई गेस इस साल आएगी या नहीं आएगी आई डोंट नो नीरज ओके कुणाल बैंग इज सेइंग 14.2 LPA ओके सो ये कंपनी तो नहीं आती है जेड ZS एसोसिएट्स करके कोई कंपनी नहीं आती जेड स्केलर आती है वो आई डोंट नो इस साल आएगी या नहीं आएगी HSBC आई थी लेकिन उसका जो भी प्रोसेस था असेसमेंट का वो बहुत ही लाइक हेक्टिक था आई वाज जस्ट एग्जॉस्टेड गिविंग इट्स असेसमेंट अच्छा HSBC का जो मेरा लाइव स्ट्रीम था लास्ट वाला मैं प्रिपेयर कर रहा था उसके असेसमेंट के लिए बट यू नो व्हाट के जस्ट द नेक्स्ट डे आफ्टर स्ट्रीमिंग we went to our college for physical registration of the exam. And in that day, the college took the whole day just for registering for the exam. And I was so frustrated that day. And also in the exam, there was it was like a open book exam. उसके assessment में ही लिखा हुआ था you can use AI and you can take around 7 days to solve the assessment. What a freaking company. Okay, all the best, Kunal. All the very best, bro. If you have reached to the interview, you will definitely clear it. I hope and wish you the best. Good luck. And if you clear it, please join me in the live stream sharing your experience, bro. Okay, okay, let's get back to the problem that we were solving. And okay, we will insert the element in our queue and then we will remove all the elements and insert it back to the same queue, right? तो ये empty तो होगी नहीं. Hmm. We need a variable named वो करते हैं int e is equals to size and while e is greater than
What? Kunal Bang, you don't need to do a super chat. I don't want that right now. I think I'm self-sufficient to build this up on my own. But I would definitely urge you to keep sharing your experiences and like wherever you go, the interviews you give, keep updating about those to me. I would love to hear you succeeding rather than getting a super chat. Right now, it's fine. Okay, while t is greater than 1, we will keep adding all the elements to the queue itself and will update the size by 1. I think it will work. Return minus 1, removed. Okay, q1 dot peak, and all the other functions will be the same, right? Some error. Okay. Mm, okay. Thank you so much, Kunal, but it's fine. अभी चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा उतना काफी है. Mm, it is returning to true instead of, but when null null सही है. My stack push push pop and pop. Pop method is returning the wrong element. And why? Pop should return. It should be returning what? It should be returning 1, but it is returning 2. Q1 is empty. Q1 dot why. राहुल इज सेइंग अरे भाई थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग के बारे में बताओ. भाई बता तो रहा हूँ, मैंने भी तो 1 महीने में लॉजिक बिल्ड किया ना. स्ट्राइवर की शीट फॉलो कर भाई. सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लर्न द बेसिक्स एंड स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम. और रेगुलरली प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो लॉजिक बनने लगेगा. और 20 दिन का गैप लेगा जैसे मैंने लिया तो फिर तू ही भूल जाएगा जैसे मैं भूल रहा हूँ. बट आई एम रिवाइजिंग एंड फ्रॉम टुडे आई विल बी कंसिस्टेंट फॉर श्योर. ओके, while t is greater than 1. ओके, इसको अपडेट तो किया ही नहीं. यहाँ पे t माइनस माइनस लगाना. I think that is that. पॉप मेथड. अच्छा ठीक है, 1 1 रिटर्न करना कर रहा है बट 2 रिटर्न करना चाहिए. इनपुट क्या है इसका? My stack, then push 1 push 2, current top element is empty. Why? I mean pop method should return 2, not 1. अच्छा ठीक है, इसमें क्या किया हमने? इसमें क्या किया था कि जैसे ही एक एलिमेंट को इंसर्ट किया एंड देन वी remove all the front elements and insert it back to the queue so that the inserted element becomes the front of the queue, right? So we are doing the same now. We are taking a size and
We are removing the front end now. Size becomes 1, size becomes 2. Just put this together. Huh? Let's see. ओके हाँ वही शायद ई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया। अरे हाँ 20 दिन से कोडिंग नहीं किया ना इसलिए। ओके हाँ चलो। करेक्ट मेथड है। फिर कुछ गड़बड़ कर दिया इसमें। इसको ग्रेटर देन कर देंगे। ओके नाउ इस हाँ हाँ कर दिया कर दिया। पता है याद आ गया मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया लाइक लिटरली। चल गया। सबमिट करते हैं आई थिंक इट इज करेक्ट बट पॉप मेथड सही है। जब तक Q1 एम्प्टी नहीं होगा it will remove the front element and it will act as stack also. Top will also return without removing and empty will empty। बाकी सब तो सही है सबमिट कर देते हैं। ये भी सही सॉल्यूशन। सो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये याद रहेगा आप थोड़ा कुछ दिन तक रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। 1Q solution is done। Testing class। ओके 1Q वाले अप्रोच में पॉप एंड टॉप मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आसान है। इट इज सेम एज यूजिंग 2 Qs बट इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लोअर है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लोअर। क्यूज भी कम यूज करनी पड़ रही है बाकी। ओके द बेस्ट अप्रोच इज यूजिंग सिंगल क्यू। बाकी और क्या प्रॉब्लम्स हैं। queue using array is done, stack using queue is done, queue using stack is done, stack using linked list। ये तो और सिंपल है। चेक फॉर बैलेंस्ड पैरेंथेसिस रिवाइज कर देते हैं। बढ़िया है ना सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यूट्यूब की वजह से मेरी प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा धीरज एक बात बता कि अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं अगर मैं अपने देख जैसे मिड सम भी आ रहे हैं फाइनल एंड सम भी आ रहे हैं और उस सब के बीच में अगर मैं कोशिश करूं कि जो रिमेनिंग 200 के अराउंड प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे को सॉल्व करना खुद से बिल्कुल नहीं आता है टू बी ऑनेस्ट। मुझे सीखने पड़ेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे चल ठीक है स्लाइडिंग विंडो टू पॉइंटर तो मैं कर लूंगा लेकिन हीप ग्रीडी एल्गोरिदम बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी ट्रीज ग्राफ डीपी ट्राइज ये सब मेरे को सीखना पड़ेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं ये सब सीख के 10 दिन में बाकी के रिमेनिंग 200 प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं अगर मैं 8 8 10 10 घंटे लाइव स्ट्रीम करूँ तो ऐसा हो सकता है क्या। तू साथ देगा।
साथ साथ सॉल्व करेगा क्या लाइव स्ट्रीम पे? बट बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि सीरीज को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, लाइक इंस्टेड ऑफ 45 days वी विल टेक अराउंड 60 to 70 days to solve the sheet, but we have to prepare for our exam also. That is why, है ना, that will be the best option. ये तो सिंपल है, स्टैक का यूज करके हो जाएगा। कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग को, एंड देन वी विल चेक इफ इट इज अ ओपन ब्रैकेट और अ ओपन कर्ली ब्रैकेट और अ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। इसको स्टैक में डाल देंगे, अगर नहीं होगा तो वी विल चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी। वी नीड टू रिटर्न अ boolean। हाँ तो मैं वही धीमे धीमे करूंगा पूरा। 10 दिन में करने का नहीं सोच रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा था, लाइक लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहा था तो मैं सोच रहा था कि 10 दिन में पूरा का पूरा चैलेंज खत्म करना है, बट इट इज नॉट पॉसिबल यार। लेकिन अगर 45 days में कर पाता तो कर लूंगा। हेक्टिक है या इजी है, कुछ एक बोल। हेक्टिक भी है, इजी भी है, जब करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, स्टैक का सही है। फर्स्ट विल चेक फॉर द ओपन ब्रैकेट, अगर नहीं होगा तो we will check if the stack is empty, if it is empty we will return false, but why? Valid parenthesis में अगर empty string होगा तो we should return true। Every closed bracket has a corresponding open bracket of the same, containing just the characters determining if the input string is valid। अच्छा ठीक है, वैलिड जब होगी जब उसमें। ओके, तो इस महीने कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, कहीं तक तो पहुंचेंगे। इजी है तो विल ट्राई। ठीक है, empty string will be false because उसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है। then we will take a variable top and insert the top element, and then we will check for ch। अच्छा ठीक है, विदाउट ओपन ब्रैकेट के अगर क्लोज ब्रैकेट आ जाता है तो इट इज नॉट अ वैलिड पैरेंथेसिस और नोटी, इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई। एंड top will insert, then the next element। यार मैंने सेमेस्टर का तो अभी कुछ देखा ही नहीं। सब्जेक्ट्स क्या है अपने? टू बी ऑनेस्ट, आज के भी समझ- इस पे नाम तो होंगे ना सब्जेक्ट्स के, ये नाम ही नहीं है? भाई खाली पड़ा है ये तो। हम्म, Tech 7 तो
C plus E, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। डिपार्ट ये DEDC क्या है यार? एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर तो होगा अपना। अच्छा, DEOE डिपार्टमेंट डिसाइड करेगी। मेजर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट अटेंड किया था प्रेजेंटेशन नीरज। भाई हम तो वेट करते रहे, मैंने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया था, अभी प्रोजेक्ट पे बताता हूँ अभी। ठीक है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स तो करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट सन में DEOE होगा। व्हाट्सएप होगा। कॉलेज तो कोई गया ही नहीं, कॉलेज गया होगा क्या कोई? सांस चलिए। ओके, डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स में कंप्यूटेशनल लॉजिक और कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस है, डीप एंड रिइंफोर्समेंट लर्निंग है, वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग है, और बिग डेटा। अच्छा, इन चारों में से कोई एक होगा और इन चारों में से कोई एक होगा। क्रिप्टोग्राफी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा माइनिंग एंड वेयरहाउसिंग, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये होना चाहिए यार, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काम आएगा थोड़ा। यार हम लोग को तो लाइक एंट्री ही नहीं किया, हम लॉबी में वेट करते रहे ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उन्होंने लाइक एंट्री नहीं दी, एक्सेप्ट ही नहीं किया मीटिंग के लिए। और मैंने एक दिन के अंदर ना पूरा प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट भी क्या था, कोडिक्यूल्स की स्किल शेयरिंग कम्युनिटी। अभी बताता हूँ। अभी विजिबल है क्या? VS कोड वाला पेज कन्वर्ट, VS कोड, कोडिक्यूल्स हब, अब दिख रहा होगा। ये रहा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। पता नहीं क्या क्या किया मैंने। CD sector, tab, सर्वर रन हो गया। then cpp line, PPT भी बना दी, पूरा सब कुछ कर दिया, और उनमें लाइक कुछ है ही नहीं कुछ। ये है कुछ तो कोडिक्यूल्स हब के नाम से वेबसाइट बना दी अपन ने। पूछा क्या अपॉर्चुनिटी मिली प्रेजेंटेशन देने के लिए। ये लॉगिन किया, लॉगिन करके अपना लाइक एक रोड मैप, जैसे एक वेबसाइट होगी जिस पे अपन रोड मैप्स बनाएंगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए। लाइक सब लोग पूछते हैं ना मेरे से कि भैया DSA कहाँ से करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कौन सी लैंग्वेज में करना चाहिए, दिस और दैट। तो वो सारे क्वेरीज का आंसर होगा अपनी वेबसाइट। वेबसाइट पे अपन बहुत सारे रोड मैप्स रखेंगे। अभी तो एक ही रोड मैप बना दिया मैंने DSA के लिए जावा से। और जो भी लाइक यूजर्स होंगे वेबसाइट के, वो उनका प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं कंसिस्टेंट रहने के लिए। कम्युनिटी में उनका प्रोग्रेस शेयर कर सकते हैं। जैसे कोड क्राफ्टर से आज का मेरा डे 35 ऑफ 45 days ऑफ कोड चैलेंज डन। और ये मैं पोस्ट कर दूंगा तो ये पूरी कम्युनिटी को दिखेगा यहाँ पे।
और ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने एक दिन में बनाया, नीरज। एक दिन में क्या, 10 मिनट में बनाया। तो सही है ये। यहाँ पे मार्कर्स डन करेंगे, एरेज कंप्लीट हो गया, स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया, लिंक लिस्ट भी कंप्लीट हो गया, स्टैकिंग कीज चल रहा है अभी। तो इट विल अपडेट द प्रोग्रेस, और एकदम प्रोटोटाइप है, बहुत ही इजी एंड सिंपल सा। सो बट ये अपडेट नहीं हुआ, टॉपिक्स कंप्लीटेड, एक्सपीएम स्ट्रीक्स, सिंपल सा आइडिया था। आई होप कि अब नंबर ना काटे यार वो लोग। मीटिंग ज्वाइन तो की थी हमने। क्या है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, बिग डेटा एंड क्रिप्टोग्राफी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अच्छा। First and big data is D702D, D and A. Okay. हाँ सही चीज है ना। और मतलब एक और चीज बनाई मैंने। क्या क्या, हाँ ठीक है। इसको प्लेस करते हैं। ओपन, एक एक कंसिस्टेंसी पोर्टल करके बनाया। हम्म, इसको सर्वे एंड line, इनकी शिवानी भी आती है। नीरज, ये एक वेबसाइट बनाई है, इस पे जो भी लाइक, जैसे तू डेली डेली अगर मेरे को ज्वाइन करेगा ना, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कोडिंग सेशंस के लिए, तो मैंने एक वेबसाइट बना दी। उसका लिंक मैं लाइव स्ट्रीम में शेयर किया करूंगा, तो जो कोई भी मेरे साथ में डेली डेली स्ट्रीक बना रहा है ना पढ़ाई करने की, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड बनता जाएगा अपनी वेबसाइट पे। बस एक यूजर नेम देना है, कोई ईमेल से लॉगिन नहीं करना है, कुछ भी यूजर नेम दे दो, जैसे मैंने हरक्यूलिस दे दिया, और मैंने प्रेजेंट लगा दिया, तो मेरा लाइक स्ट्रीक बनती जाएगी यहाँ पे, और यूजर नेम ऐड होता जाएगा। अभी इसका बैकएंड ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, मैंने अपडेट नहीं किया, लेकिन ये एक आइडिया है जो ये भी इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाले टाइम में। बढ़िया चीज है ये। बाकी क्या, ढूंढते हैं यार शिवानी। लिंक अभी डिप्लॉय नहीं किया ना, अभी कहाँ से लिंक, अभी तो लोकल सर्वर पे है वो। बट ठीक है, एक देखते हैं, टाइम मिलेगा तो उसे बनाते हैं पूरा। कंसिस्टेंसी पोर्टल, इसकी शिवानी डाउनलोड करनी पड़ेगी कहीं से। क्या क्या सब्जेक्ट हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, बिग डेटा, क्रिप्टोग्राफी। अभी गिटहब पे भी अपलोड नहीं किया और डिप्लॉय भी नहीं किया अभी तो, प्रोटोटाइप बनाया था बस अभी। विल डू। क्या था, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। अरे आरजीपीवी पीवाई क्यों से
semester, semester. Okay, big data एंड क्या था इंफॉर्मेशन जैसे कुछ नहीं क्रिप्टोग्राफी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रेज्यूम में तो बहुत ही सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं रेज्यूम दिखाऊं मैं एक रेज्यूम में दिखाऊंगा दिसंबर 2024 क्या है वेरियस मॉडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इश्यूज स्ट्रक्चरल मॉडल फ्रेमवर्क मॉडल एंड framework model and dynamic model importance of call and return architecture Node.js is different from AngularJS, JSP, ARID with its characteristic. ARID क्या होता है? ऐसी properties होती थी. 7 part template for documentation, RMI, RCP. कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मन से ही लिख दो. Describe how layered pattern makes use of abstract common services, encapsulate and use an intermediary, Cobra, data flow architecture. Set. Someone is asking भाई कंपनीज कौन सी आती हैं आपके कॉलेज में ब्रो कंपनीज तो बहुत सारी आती हैं बट बट उनका फर्स्ट राउंड ही क्लियर नहीं होता है कंपनीज लाइक कैपजेमिनी कॉग्निजेंट एलटीआई माइंडट्री दीज आर द मास रिक्रूटर कंपनीज जो हर साल आती हैं उसके बाद में कुछ अच्छी कंपनीज का नाम है सिस्को और क्या थी पीडब्ल्यूसी 25 ईपैम जेड स्केलर ऐसी कुछ कंपनीज आती हैं कंपनीज तो बहुत सारी हैं टीसीएस इन्फोसिस विप्रो बहुत सारी कंपनीज हैं एक और क्या था ब्रो क्राइटेरिया सबसे इम्पोर्टेंट चीज है 10th 12th में और तुम्हारे सीजीपीए 6 और 7 से तो प्लस होने चाहिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज का क्राइटेरिया रहता है 7 सीजीपीए बिग डेटा एंड क्रिप्टोग्राफी और कुछ और भी अच्छी कंपनीज होती है जिनका पैकेज अच्छा होता है तो समटाइम्स दे प्रेफर 8+ सीजीपीए बट वो रेयर होती है ऐसा कम ही चांस होता है बट ऐसी भी कंपनीज होती हैं तो मतलब स्टार्टिंग में अगर वही कंपनी आती है तो ऐसा फोमो सा फील होता है कि यार 8+ सीजीपीए वालों को ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या बट जो मास रिक्रूटर कंपनीज होती हैं उनका क्राइटेरिया लाइक इजी होता है थोड़ा 7 के अराउंड होता है 7 7.5 हडूप बिग डेटा में हडूप मैं प्रोड्यूस एग्जाम्पल ठीक है करना पड़ेगा सेमेस्टर की प्रिपरेशन की लाइव स्ट्रीम पर नहीं ले सकता अच्छा ठीक है रिवीजन 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 234 के क्वेश्चंस करते हैं यूर वेलकम ब्रो किस सेमेस्टर में हो अभी के सिबाता सुया क्या नाम रखते हो यार तुम यूजर में वाई इज इट अ जापानीज नेम और अ कोरियन नेम सिबाता सुया तो मैं सीएट भी सही कर रहा हूँ या नहीं अच्छा थर्ड सेमेस्टर में हो या थर्ड ईयर फर्स्ट राउंड में डीएसए रहता है या एप्टीट्यूड ब्रो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी कोई भी कंपनी कुछ भी पूछ लेती है वैसे डीएसए तो नहीं रहता है बट फर्स्ट राउंड मोस्ट प्रोबेबली एप्टीट्यूड होता है या फिर
लाइक टेक्निकल असेसमेंट होता है जिसमें आईटी फंडामेंटल्स भी पूछ सकते हैं, एप्टीट्यूड भी पूछ सकते हैं, वर्बल एबिलिटी भी पूछ सकते हैं लाइक इंग्लिश वगैरह। उसके बाद में कम्युनिकेशन राउंड होता है टिपिकली कुछ कुछ कंपनीज का। और कुछ कंपनीज लाइक कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए कुछ कंपनीज के खुद के अपने गेम्स होते हैं। लाइक अलग अलग टेस्ट फॉर्मेट्स होते हैं तो हर कंपनी का थोड़ा अलग होता है। तो एप्टीट्यूड में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा जब भी कंपनी का लाइक नोटिस आता है कि तुम्हें लाइक ये कंपनी में अपेयर होना है या उसका टेस्ट है, उसके पहले उस कंपनी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करना। और जो मोस्ट ऑफ दी ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं ना उसमें तो लाइक क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं और बहुत ही रैंडम शॉर्टलिस्टेड नाम्स आते हैं। लाइक यू विल सी के किसी का भी नाम आ जाता है ऑनलाइन असेसमेंट जब भी होगा तो लाइक यू आर डिपेंडिंग ऑन द लक, क्योंकि सबके पास सुपर पावर होती है ऑनलाइन असेसमेंट में। बट अगर वही असेसमेंट तुम्हारे कॉलेज में होता है फेयरली तो यू विल गेट अ गुड चांस इफ यू हैव वर्क ऑन योर स्किल्स। ऐसा कौन सा प्रॉब्लम्स करने थे? मोनोटोनिक स्टैक, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, लेट्स डू दैट। यहाँ पे कुछ अपडेट है क्या? ये वाला सॉल्यूशन सबमिशन सबमिशन 29 पे सॉल्व किया था। So we created a hash map and inserted all the elements of the second. अच्छा पहले पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट फुल करके बताता हूँ। See, I had already solved this problem. Next greater element, most of you have seen it already. So we have to find the first greater element to the right of x in the same array. So we are given two array num1 and num2. num1 में वही elements हैं जो num2 में already exist करते हैं। But for each element in num1 we need to find the next greater element in num2। मतलब num1 के अंदर ये सारे elements हैं 4 1 and 2 जो कि num2 में भी है। लेकिन but for each element in num1 we need to find next greater element in num2। that means कि 4 के लिए 4 के बाद वाला ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है num2 के अंदर। तो इन दिस केस 4 के लिए 4 के बाद num2 में कोई ग्रेटर एलिमेंट नहीं है। बाद क्या मतलब पूरी एरे में नहीं है। तो इट विल रिटर्न -1। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ देर इज नो ग्रेटर एलिमेंट देन आंसर फॉर द क्वेरी इज -1। तो num1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए हमें फाइंड करना है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो 4 के लिए तो कोई ग्रेटर एलिमेंट है ही नहीं तो वी विल रिटर्न -1। उसके बाद में 1 के लिए चेक करेंगे तो 1 के बाद ग्रेटर एलिमेंट पहले 3 है। बट क्या 1 के जस्ट बाद क्या है 3 है तो यही हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा। इससे बड़ा भी 4 है लेकिन वो जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं है 1 का बट द ग्रेटेस्ट एलिमेंट है आफ्टर 1। So we will return 3 because it is the next greater element. And for 2, there is no next element in the array, so we will return -1. That means there is no greater element after 2। और इसका सिंपल मेथड क्या होता है? ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा? ब्रूट फोर्स अप्रोच ये होगा कि हम फोर लूप लगाएं। मल्टीपल फोर लूप्स लगाएंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। और उसका ऑप्टिमाइज्ड मेथड होगा ब्रूट फोर्स अप्रोच से भी सॉल्व किया था मैंने। ये था ब्रूट फोर्स अप्रोच ऐसा था। ये मैंने खुद से सॉल्व किया था इंट्यूशन से। तो पहले वी विल क्रिएट एन एरे ऑफ द size of the first array that is num1 and then we will iterate over the first array। मतलब जो फर्स्ट array गिवन है उस पे इटरेट करेंगे उसके सारे एलिमेंट्स के लिए। हम उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करेंगे num2 के अंदर। तो फोर लूप के अंदर एक और फोर लूप लगाएंगे जिसमें हम सेकंड वाली एरे पे इटरेट करेंगे
and we will compare if num1 is equals to num2, like मतलब जो I variable है, I variable is the current element in num1, and we will compare the current variable in num1 is equal to the current variable in num2, that is a array. And if the number is same, then we will again iterate forward to check for the next greater element. तो ये थोड़ा लंबा मेथड था जो कि काफी गलत भी था और जो कि इजीली हो सकता था विद द हेल्प ऑफ अनदर फॉर, और उससे भी ऑप्टिमाइज अप्रोच है यूजिंग हैश मैप एंड स्टैक। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हैश मैप में जो सेकंड एरे है उसके सारे एलिमेंट्स को हैश मैप में स्टोर कर देंगे with their indexes. Okay, and then for each element in num1, we will check for only those elements which are after that particular. इसके लिए आप explain करेंगे आप? What we need to do? We have two arrays. One is num1, which is can be suppose 4 elements, or another is num2, which can be suppose बहुत से सारे elements हैं. Let's say num1 है 1, 4, 6, 5, और इसके अंदर है सारे 1 रैंडम नंबर 4, so let's say 4, 2, 1, 3, 6, 5, 8, 7. Okay, so according to the lead code problem number, problem number 496, we have two, ये क्या हुआ? We have two array num1 and num2, and brute force approach के हिसाब से क्या करेंगे, हम सारे element of num1 में iterate करेंगे and then we will check in num2 के पहला for loop लगाएंगे तो we will be iterating over the first index of the num1 and then we will check in num2 के 1 कब आएगा। तो सारे एलिमेंट्स को इटरेट कर रहा था मैं, तो पहले 4 को चेक करेंगे if it is equal to the first element of num1, but it is not, then we will move forward to the next element, then next element. When the current element in num2 is equal to the current element in num1, what we will do, we will iterate forward after after getting the same number, and we will check if the next element in num2 is greater than the current element or the element in num1, right? So if it is greater, then we will return it to our answer array. मतलब एक थर्ड array बनाएंगे named answer array, उसका साइज सेम होगा एज num1, जितनों का हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है। तो ये वाली एरे का नाम होगा num1, it is num1, num2, this is answer array or result array, whatever we call it.
and it will have the same size and it will store the next greater element for the current element. In this case, for 1 it is 3. Then 4 it will compare the first element of the next array and will iterate for the further for the other elements and will check for the greater element than the 4. So it will be 6, it will return 6 here. For 6 it will be 8, it will return 8. For 5 it is 8, it is also 8. So it will return 8. In this way it will be done. But if we want to optimize it using stack and hash map, what we will do, we will use a hash map. I thought someone commented or deleted something. Okay. For optimize approach, what we will do, we will use a hash map and a stack. तो हैश मैप में क्या करेंगे, हम सारे जो नंबर्स हैं num2 में उनका इंडेक्स स्टोर कर लेंगे. ओके, तो हैश मैप, लेट्स से इट इज अ हैश मैप, इट इज एचएम हैश. इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं num2 के उन सबको हम स्टोर कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर इंडेक्स. तो 4 का 4 is the key and its value is 0 as the index. 2 is the key, its index is 1. 1 is the key and its value is 2. 3 is the key and its value is also 3. 6 is the key and 5 is the value. 5 is the key and 12 is the value. And similarly, 8 and 7 will be done. Is 8, is 7, this is 7, this 7. So what we will do, we will only check, मतलब for each element in this, we will check कि इसका इंडेक्स क्या है. तो अभी हमने सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया हैश मैप में. देन वी विल यूज अ फॉर लूप टू इटरेट ओवर द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इन num1. And then for each element we will check what is the index of that element. मतलब if we have 1, we will get the index of num1 and num2. मतलब ये जो मेथड है for j is equals to map dot get num1 of I, right? If index is reverse order, एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे. तो ये जो एच एन एम है इसमें जो कीज हैं वो वैल्यूज होंगी और जो वैल्यूज हैं वो कीज होंगी. एंड देन वी विल for j is equals to map dot get num1 of I. ओके, इट विल रिटर्न द इंडेक्स होंगी ना, सही तो था. ठीक है ठीक है, सॉरी. ये ऐसा ही होगा हैश मैप में वैल्यूज के साथ में इंडेक्सेस पेयर करेंगे.
एंड जब नम वन के लिए, जैसे वन के लिए हम एच एम डॉट गेट नम वन ऑफ, मतलब नम वन ऑफ आई करेंगे तो इट विल रिटर्न वन, मतलब जब आई इज इक्वल्स टू जीरो होगा तो इट विल रिटर्न वन, और वन का इंडेक्स क्या है, टू, सो इट विल रिटर्न टू। एंड अगर ये टू रिटर्न करेगा तो जे की वैल्यू टू हो जाएगी, मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम the actual index of 2, मतलब instead of starting from the first element every time, it will start from 2 itself and only compare the next element after 2, and then it will compare the next elements. If it is greater than the the current element, it will update the result, and then it will break. It will find for the greater element for the current value. And for I is equal to 0, एंड फॉर ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट जिसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिलेगा उसको हम अपडेट करके माइनस वन कर देंगे, दैट विल बी द बेटर सॉल्यूशन। इट बीट्स 98% सॉल्यूशंस। एंड लेट्स, अच्छा ठीक है, ये डन है। देन वी विल सॉल्व नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू। लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। Given a circular integer array nouns, that is the integer array nouns, the next element of nouns, nouns dot length minus one, is nouns zero. Return the next greater number for every element in nums, दैट, इसका मतलब बस ये है कि पूरी एरे के अंदर कोई भी ग्रेटर एलिमेंट होगा उसको रिटर्न करें, any element which is greater than the current element of in the right or from the beginning. Okay, so can be to the, for every element we need to return the next greater element, right? So let's create in array and result equals to new print of the nums dot length. So it will create a result array, and then what we can do, hello SG bro, how are you? Okay. Ah, you think it's an easy problem? For me, it is the hardest problem. Okay, how to do that? How is your project, SG? Mm, we created the result array. Then for each element belongs,
We need to check till the end. Joy less than one slot is launch. Check this first. So we'll check for all the remaining. For sure, bro, you are welcome. All the time, you can solve problems with me, but I'm learning. We are solving. Okay, for each element, we will let's put the time and two amounts of two is greater than one of I, then we will update the amount of I is itself in ones of j. This is for the next little element to the n of right. So for one, the next little element is two. For two, the three is four. But the next three, it is four. But four, it is minus one. It would be over to the n. To count is equals to false. And if it is found, we will update count is equals to true. And if it is not found on the right, if not found, we will run a for loop for int j is equals to 0 and j less than I, j plus plus, and we will compare nums of j is greater than nums of I, and if nums of j is greater than nums of I, we will do we will update result of I is equals to nums of j. Right? Solve it in Sanskrit as G. Mhm. Okay. It will update count the elements and then we will return the answer or result that fine. Return. Sorry. Let's run it.
check this wrong way to this. अरे otherwise -1 भी तो करना है. Okay. 0 0 1 1 के लिए 2 है, that is good. Less than की जगह equals to. So it's not fine. Okay. Else result of r equals to -1. That is good. And other error is because -1 to -1, y0, y0, y0. If now, अच्छा ठीक है ये तो गलत जगह पे गया. If not found, it will go from 0 to I and update. अगर उसके बाद चीज it would state अरे ये चीज तो किया नहीं है इसका found is equals to true. यहाँ पे होता ना found is equals to true and after the for loop if not found then result of I is equals to -1. Yes, that is right. Computer means we have right. If it is found right, it will update and update the file. Very good. 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 Found false. False. Well, then the right it will search. If it is not found, it will check from the starting. Okay, this time it is giving runtime error. 3, 4 -1 is not right. So 1, it should return 3. Oh, it should return 2, but it is giving 3. Why? On the right, J is equals to and everything is working correctly. Minus J is equals to I. It would have been not mentioned.
So 1 and that's going to be 0. And j is also equals to 0. And it can compare to itself. If it is bigger than itself, it is not. Then pretty much determine j will be 1 and nums of 1. What is this error? Let's ask ChatGPT. What's the error in that logic? Almost correct, but it has a small logical issue. After you find the next data image, you should break out of the loop instead of continuing to search. This is the mistake that we heard about it, but not it is happening. Let's go SG Pro if you have solved it already. It's not a quite good solution, 31 milliseconds, but brute force is brute force. Now let's see how we can optimize it using stack and hash map. We will use a stack and teacher stack is to dot another and strike method, I guess. The next brutal element is on RSL. Suppose we are given an array और जो गिवन क्वेश्चन है ना सेकंड वेरिएशन ऑफ नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू इसमें हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड देखना है। अगर
राइट साइड में अगर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिलता है तो वी विल चेक फ्रॉम द स्टार्टिंग। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इनपुट का एग्जांपल कहाँ है? डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी करते हैं। 1 2 3 4 and 3। तो लेट्स से 1 2 3 4 and 3 is given there. So for checking the next greater element of 4, मतलब अगर 4 के बाद अगर कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिलता है तो वी हैव टू चेक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑल्सो, राइट? ये सर्कुलर एरे की तरह है। तो वी हैव टू चेक द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? लाइक इस प्रॉब्लम को के इजीली ऑप्टिमाइज करके कि वी विल कॉपी दिस एरे ट्वाइस। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि 4 के बाद का जो भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा वो यहाँ से यहाँ तक में मिल ही जाएगा, राइट? मतलब इसके पीछे के जो भी एलिमेंट्स है वो आगे आ जाएंगे, तो वी विल बी एबल टू लुक अप टू द values which are on the left side. That is good. Knowing the approach matters. So what we will do, इसके लिए हम क्या करते हैं? तो we will run the loop from I is equals to 0 to 2 to the power 2 into n, not 2 to the power n, but 2 n minus 1 तक loop को run करेंगे। Okay. N is the size of the array, 2n is the double the size of the array, 2n minus 1 is the double the size of the array minus 1. And using the stack, from the beginning we will check अगर stack मतलब जो करंट एलिमेंट के लिए अगर हम चेक कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से तो करेंगे ही नहीं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड। ठीक है, लेट्स we have created a step, and instead of starting from the beginning we will start from the end in I is equals to 2। यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है, means n is equals to nums dot len and 2 star n minus 1, and I is greater than equals to 0, I minus minus. You will do a while loop while stack is not empty, stack dot is empty is not true, and stack dot key is अगर stack dot key equals to होगा nums I factorial of n।
इसका मतलब समझो कि अगर स्टार्टिंग से उस पर्टिकुलर नंबर तक है तो इट विल बी 0 1 2 3 4 रिमाइंडर ऑफ, और अगर n से बड़ा है i तो इट विल गिव द रिमाइंडर फ्रॉम स्टार्टिंग। क्या कह रहा हूँ मैं? Hmm, we will do that dot pop, and after that, if I is less than n, we will update result of I is equals to stack dot, अगर stack empty हुआ तो it will return -1 empty, तो tertiary operator का यूज करेंगे हम क्वेश्चन मार्क। अगर ये ट्रू होता है stack dot empty तो we will insert -1, otherwise it's like this -1, otherwise stack dot equal set कर देंगे। And if I is greater than n, stack dot push nums of I factorial of n. That means the number on the left side of the given number will be inserted and we will return the result. Let's run it. Couple times. यहाँ पे int I is equals to 2 to the power minus 1, I 2 to the power equals to 0, I minus minus. Okay, double brackets. It matters, bro. The speed of the solution matters. Mine is 0 now. Submit नहीं हो क्या? Now I'm submitting it and see the comparison. Now it is better than 67% of the people. And I don't know what is the best solution. The best solution is using stack array fill answers as -1 for int I is equals to 0, I less than nums into 2 times the length. Similar approach है वैसे. Okay, guys, it's time for a break and I will be back in 20 minutes. Okay, something. How should I get that update? Yes, so Postcode is visible, right? Yes. Okay.
I am back. Yes. Am I audible? Now I'm visible. And that's fine. Live chat. Thank you so much, both of you. You can follow the Strivers sheet SG to get new problems every single day. Okay, let's get back to work. Next problem is next smaller element. Number of ng is to the right. Hello, am I audible? आवाज तो एकदम क्लियर है, फिर भी कुछ लोग बोल रहे थे कि आवाज स्लो आ रही है।
Zoro, in which semester you are right now? Welcome to our live stream. Sorry. No. Hmm. Trapping rainwater that we can solve. It is a hard problem on Leetcode. It's a major problem, right? Trapping rainwater is a hard problem. It to, I guess, easy problem. Is it? You're in fourth semester, then it is the right time for you to start learning DSA and start applying for internships and off-campus opportunities in your fifth, sixth semester itself. You will definitely get some opportunities in your third year itself. Yeah. If you learn DSA in your fourth sem. क्या प्रॉब्लम है गिवन n non-negative integers representing an elevation map where the width of each bar is 1, compute how much water it can trap after raining. So we just need to compare the current element with the previous element और the next creator element का concept लगेगा इसमें. तो इसका next creator element जो भी होगा उसके और इसके बीच का difference give us इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ यूजिंग स्टैक कैन क्यू आई थिंक सॉल्व तो क्या है मैंने इसको देखा so for each element what we can do कि width तो सबकी same है width is equals to 1 we just need to compare the heights so let's say for the first element it will how much water will be consumed. We will compare to the left and the right. For the first element, there is no left, so it cannot contain any water. Then for the second element, we will check if the element on the left is greater. If it is greater, then it will contain the water of the amount that is equals to the difference between the two elements, right? And also to the right. So we need to take into account two variables for a one index, left and right. If we will take a variable water, which will
add the values of water that it can contain, it can trap, and starting from the first index, we will check left max and current height. So, for example, if we are on the index number 0, 1, 2, 3, 4, and 5, अब we are on fifth index, and fifth index के लिए जो left max होगा वो होगा for third index पर, and right max होगा seventh index पर, and इन दोनों में से जो सबसे छोटा होगा मैक्सिमम उतना ही पानी ये स्टोर कर सकता है. So we will take in account the minimum of these two and the difference between the height. Okay, I got it. So we will take two variables. One is the left max, another is the right max, and we will find for every index the left max and right max. Okay, let's say mm, int and is equals to height, and I actually just height dot length and water int water is equals to 0. ठीक है, and then for loop लगाएंगे for int I is equals to 0, I less than n, I plus plus. Okay, and two variables क्या होंगे left max and right max. Hello Vamsa Vardhan, happy birthday. आज birthday Vamsa का, everybody wish him happy birthday. Int left max is equals to 0 and right max is equals to 0, and then for int, like अब सारे के सारे indexes के लिए we will find the left max and right max. So left max के लिए we will go to the left. That means int j is equals to I. ठीक है, and जब तक j greater than equals to 0 रहेगा we will keep decreasing the value of j for comparing the left max, right? And we will update left max is equals to math dot max of left max comma height of j, which is the height of j, right? So it will find and store the left max, मतलब जो current index है उसके left side भी जो भी maximum होगा उसको store करेगा. ठीक है, and then we will run another for loop in j is equals to I, j less than n, j plus plus, और ये फाइंड आउट करेगा राइट मैक्स. तो राइट मैक्स को हम अपडेट करते जाएंगे विथ मैथ डॉट मैक्स ऑफ राइट मैक्स कॉमा हाइट ऑफ जे, राइट? कॉलम में सेमी कॉलम. So we have right max, we have like left max for each index. Now we will update the quantity of water plus equals to क्या होगा, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा ना उसके बराबर का पानी तो हम स्टोर कर सकते हैं, और उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, जो मतलब जो लेफ्ट और राइट मैक्स में से जो भी मिनिमम होगा
तो मिनिमम का और जो करंट इंडेक्स है उसकी हाइट का डिफरेंस इज द वाटर दैट वी कैन स्टोर। फॉर एग्जांपल, अगर ये वाले इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, तो इसका लेफ्ट मैक्स है, देखो इसके एग्जांपल से मैं बताता हूँ। ये 2 इज द लेफ्ट मैक्स फॉर 1, है ना? तो ये किस इंडेक्स पे, 0 1 2 3 4। तो फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके लिए लेफ्ट मैक्स है 2, जो कि थर्ड इंडेक्स पर है। और राइट मैक्स है वो है 5 6 7 पे, 7 पे वो है 3। तो इसका लेफ्ट मैक्स 2 है, तो ये मैक्सिमम 2 के जितना पानी स्टोर कर सकता है ना। अगर इसकी हाइट 0 होती तो ये 2 के बराबर पानी स्टोर कर सकता था, है ना? एंड अगर ये बड़ा होता और ये छोटा होता राइट मैक्स वाला, तो इट विल स्टोर ओनली इक्वल टू राइट मैक्स। सो वी जस्ट नीड द मिनिमम ऑफ द टू, लेफ्ट मैक्स एंड राइट मैक्स के बीच का जो भी सबसे छोटा होगा वो चाहिए, एंड द डिफरेंस बिटवीन द करंट इंडेक्स की हाइट। तो वाटर इज इक्वल्स टू, तो मिनिमम हमें चाहिए क्या, लेफ्ट और राइट मैक्स। तो मैथ डॉट मिन ऑफ लेफ्ट मैक्स कॉमा राइट मैक्स। ओके, एंड इसमें से सबट्रैक्ट क्या करेंगे, करंट एलिमेंट की हाइट। तो हाइट और करंट इंडेक्स पे क्या है, आई, राइट? फोर लूप में आई इज द करंट इंडेक्स, एंड देन वी विल रिटर्न वाटर, राइट? लेट्स रन इट। क्या हुआ? आई होप इट वर्क्स। एरर दे दिया उसने। राइट मैक्स की स्पेलिंग बोले तो क्या? अरे कॉलम नहीं, कॉमा आएगा। ओके, now it works. So let's submit it. Crafting rainwater problem. Time limit exceeded. Okay. स्टैक का यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो एम स्क्वायर ही हो रही है वैसे। हम्म, कैसे ऑप्टिमाइज करें आप इससे? स्टैक एक्चुअली हेल्प, सो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऑटो है। एन क्यूब में एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कौन सा? ये नेक्स्ट फोर लूप के अंदर नहीं है। ओके, you did not understand the problem. Let me explain the problem. Problem is we need to find the amount of, we need to find the amount of water that these pillars can trap after the rain. Imagine these are the buildings or like stones, and according to their size, they can trap some water after rain. So we have given an array जिसमें every number represents the height of that particular point, and if there is a difference between the two heights, it can store some water that is equal to the difference of their heights.
we need to calculate the total amount of water that this array can store, right? I think it can also be solved using two-pointer approach. For loops for that then. Total is equals to 0 and left is equals to 0. Right is equals to height of length minus 1. Okay, and the left max is equals to 0. Right max is also equals to 0 and water is already 0. Hmm. While left is less than right, we have two pointer. One is pointing to the leftmost element, one pointer is pointing to the rightmost element. And if the height of the left is less than height of rightmost element, right? Then we will check. See what we are doing. We are pointing one pointer on the starting and one to the end, and we are comparing if left is less than right. So in this case, the leftmost element is less than the rightmost element, and then we will compare the height of the left element is greater than or equal to the left max. Left max is, suppose if we are on the fifth index, left max is currently this, the element on the third index. So we will compare if the current left is greater than or equal to left max. That is not the case. अगर ये होता, suppose if it is greater than or equal to left max, that means the third index is greater than or equal to the left max. We will update it. तो जो हमारा लेफ्ट मैक्स की वैल्यू है उसको हम अपडेट करके थर्ड इंडेक्स बना देते हैं. And if it is not the case, like in the fourth index, what we will do, we will add water equals to left max minus height of the current left. Right. So, okay, and we will increase the left. I think you are getting what I'm saying. If height of left is less than height of right, we will again compare if height of left is greater than equals to left max, then we will update left max with is equals to height of left, else अगर इसके इक्वल नहीं होगा तो we will update the value of water. Water will be equals to plus equals to left max minus height of left. ठीक है, लेफ्ट का current pointing value, and we will increase left plus plus. Otherwise, if height
of left is not greater than height of right, we will do something else. If height of right is greater than equals to right max, we will update right max. Height of right else we will update the value of water. Water plus equals to right max minus height of right eight and one right minus nice. Right की value decrease होती जाएगी. And if you what let's run it. ये वाला अप्रोच कैसा है? कंपाइल टाइम एरर आ गया. अप्रोच ही गलत है. Why left राइट की स्पेलिंग गलत लिखती है. RIGHT होता है ना राइट. Okay, it is working this time. I hope it will not give TLE and it beats 100% of the solution. But we have to solve it using stack. ये तो हो गया इसका optimal solution using 2 pointers. स्टैक की हेल्प से कैसे करेंगे इसको सॉल्व. स्टार्टिंग इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक जाएंगे and we will check if the current height is the maximum. Stack the implementation कैसे होगा. Zoro saying this is so difficult. Bro, you have not solved this similar problems. That is why it seems difficult. मतलब ये जो 2 pointer अप्रोच है ये इजी है. भाई स्टार्टिंग में तुम कई सारे प्रॉब्लम्स करोगे अगर तुम स्ट्राइवल की शीट फॉलो करोगे ना तो एरे के प्रॉब्लम्स करने जब जाओगे तब तुम 2 pointers की काफी सारी प्रॉब्लम्स कर लोगे यहाँ पे. समथिंग लाइक जैसे कि टू सम हुआ and Cardano's algorithm, stock buy and sell, rearrange array, leader in array. ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो सेम अप्रोच को फॉलो करती है. तो ये जब सॉल्व करोगे तब तुम सीख जाओगे 2 pointer अप्रोच. और एक्चुअल डिफिकल्टी तो है इसको स्टैक से भी सॉल्व करने में. स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन मुझे समझ नहीं आ रहा है. स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. You are not able to solve problems in binary search. How would I know? Now let's try to solve the same problem using stack. Dynamic programming से भी हो सकता है. Stack and monotonic stack.
Zoro don't mind. He's just I don't know nowadays if I sleep, listen, sleep. So sleep, bro, sleep. Sleeping is also important, but we need to find the valleys. Mm, Let's go to step. Instead of going left to right, let's go to start with integer. Start with equals to now. And then we will traverse each element of the array to for each index. We will check if the stack is not empty and current height is greater than the height of the uh, height at the top of the stack. If the current height is greater than the top of the stack, then we are on the right, probably. Suppose we are keeping track of valley. So let's say we are on the right position. And for the top of the stack, that is this one, that gives you the bottom of the valley. If the stack becomes empty, new left boundary becomes water. So we will break it. Otherwise, the new stack top is the left boundary. That means if we are on the fourth index, current height is greater than the previous height,
And if we remember it, okay, congratulations, G. Let's try. Mm, Why? Okay. I variable Vinathan and as equals to 0, while I is less than me, and इसके अंदर while not that dot is empty and 5 of I is greater than 5 of the stack dot peak, right? Mm, with top, which is just start dot top, and then if that is empty, we will create the loop while dispelling everything. Otherwise, if it is not empty, okay, once over done, bye bye. Int distance is equal to I minus stack dot peak minus 1. And bounded height into top stores the height of the highest quantity in the in time is equal to match dot unit of height of I, comma height of j dot e and minus height of top. तो दोनों के मतलब वैली के लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट पार्टीशन की हाइट्स का डिफरेंस एंड देन water plus equals to distance into bounded height.
Oh, let's try to learn height की spelling क्या let's go see. कितना spelling mistakes की हैं और कहाँ पे तो errors ना bounded की जगह bounded की that's अब तो ठीक है ओके ठीक है स्टैक का implementation के बाद बस सबमिट करता हूँ and it's not a good solution. Zero is saying, can you explain this please? Yes, why not? Mm, let's see. And take examples on the input. Let's say this is the given array. Mm, okay. And this one, is it a bit different process? So, okay, क्या कर रहा हूँ मैं ऐसे ही वर्बली बताता हूँ सो सी मतलब हमें क्या करना है हमें हाइट्स गिवन है और हमें उनके बीच में ट्रैप होने वाला वाटर फाइंड आउट करना है ये इस इमेज पे जैसा गिवन है तो हम क्या करेंगे हम स्टार्टिंग से सारे इंडेक्सेस को चेक करते जाएंगे जब तक लाइक जैसे मैंने कोड में लिखा है एक आई वेरिएबल लिया है मैंने आई इज इक्वल्स टू जीरो है ना यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू जीरो लिया है ना ये क्या है ये अपने इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो से लेके एन तक एन इज द साइज ऑफ द गिवन एरे ठीक है जिसमें नंबर ऑफ मतलब हाइट्स गिवन है तो जब तक आई एन से छोटा रहेगा तब तक हम इस कोड को रन करते जाएंगे तो इसके अंदर जो वाइल लूप है उसमें वी विल चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी और स्टैक में हम क्या स्टोर करेंगे हाइट्स को स्टोर करेंगे और तब तक स्टोर करेंगे जब तक के जो नेक्स्ट हाइट जो हम एनकाउंटर करेंगे वो प्रीवियस हाइट से बड़ी नहीं होती है तो मतलब जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता या फिर हाइट जो करंट एलिमेंट की हाइट है वो पिछले हाइट से ज्यादा रहती है मतलब इसका मतलब बस यही है या तो एक तो स्टैक एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए एंड हाइट जो करंट इंडेक्स की है जैसे आई को हम लेके चल रहे हैं ना 0 1 2 3 4 तो जैसे कि करंट इंडेक्स अगर 1 है तो अगर इसकी हाइट प्रीवियस वाले से ज़्यादा है लेकिन स्टैक एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए स्टैक तो अभी एम्प्टी था तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे वाइल लूप के अंदर स्टैक में हम डायरेक्ट आई प्लस प्लस पुश करते जाएंगे
ठीक है, पूरा ड्राई रन करके बताता हूँ। आई इज इक्वल्स टू जीरो है। जीरो पे क्या होगा, जीरो पे हाइट हमारी गिवन कितनी है, जीरो गिवन है। और जब तक आई लेस देन एन है तो वी विल रन दिस कोड, एंड इन दिस व्हाइल लूप वी विल चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी। इनिशियली स्टैक तो एम्प्टी है, फिर इसको रन नहीं करेंगे। वी विल जस्ट डायरेक्टली पुश स्टैक। स्टैक में क्या पुश करेंगे, आई प्लस प्लस। आई करेंटली क्या जीरो था, आई प्लस प्लस होके मतलब जीरो पुश हो जाएगा स्टैक में, क्योंकि करंट वैल्यू इसकी जीरो थी। और आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बाय वन। अब अगेन हम सेम लूप को रन करेंगे। आई की वैल्यू अभी भी एन से छोटी है, एन इज द साइज ऑफ द एरे। एंड देन वी विल अगेन कंपेयर इफ स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक इज नॉट एम्प्टी दिस टाइम, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमने स्टैक में कुछ पुश कर दिया। ठीक है, आई की वैल्यू पुश की थी, आई की वैल्यू थी जीरो। तो इस बार स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक में वैल्यू है जीरो। तो वी विल कंपेयर द करंट हाइट। इफ द करंट हाइट इज ग्रेटर देन स्टैक का टॉप। स्टैक डॉट पीक क्या रिटर्न करता है, स्टैक के टॉप की वैल्यू। तो स्टैक के टॉप पे क्या है, जीरो। तो इट विल कंपेयर द करंट वैल्यू, जो सेकंड मतलब जो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे जो हाइट है दैट इज वन। ये ये जो वन है ना, ये करंट हाइट है आई की। एंड जो स्टैक के ऊपर जो हमने पुश कर रखा है वो है जीरो। तो प्रीवियसली इसके इसकी स्टैक के अंदर क्या हाइट स्टोर्ड है, जीरो। और करंट इंडेक्स की हाइट है वन। देन वी विल कंपेयर कि करंट इंडेक्स की हाइट अगर स्टैक वाले इंडेक्स से ज़्यादा है, तो वी विल व्हाट वी विल डू, वी विल अपडेट द टॉप टॉप एज स्टैक डॉट पॉप। मतलब जो स्टैक के सबसे ऊपर वाली वैल्यू है उसको टॉप से अपडेट कर देंगे, लाइक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। एंड देन मतलब पॉप में ना रिमूव हो जाता है एलिमेंट। अगर उसके बाद हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाता है, मतलब कि इसके जस्ट लेफ्ट वाले हाइट को अगर हम पॉप कर देंगे, और अगर स्टैक एम्प्टी हो जाता है उसका मतलब यह है कि इसके लेफ्ट साइड में कोई भी पिलर नहीं है। पिलर नहीं है तो इसके लेफ्ट साइड में कोई वाटर स्टोर नहीं होगा। समझे? तो स्टैक टॉप में हम स्टैक डॉट पॉप को स्टोर कर देंगे, और उसके बाद में अगर स्टैक एम्प्टी हो जाती है तो इसका मतलब है कि इसके लेफ्ट साइड में ना कोई भी पिलर नहीं है, तो ये पानी स्टोर नहीं कर सकता। तो हम ब्रेक कर देंगे, जो ये वाली वाइल लूप थी ना इसको हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में कोई भी ऐसा पिलर नहीं है जो पानी को रोक सके। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होता है, मतलब कि दो से तीन पिलर हम ऑलरेडी स्टोर कर सके चुके हैं स्टैक में, तो देन वी विल काउंट द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा कि प्रीवियस वाले जो भी मतलब जो टॉप पे जो भी हाइट है उसका डिफरेंस करंट इंडेक्स से एन माइनस वन। मतलब सपोज इफ वी आर ऑन द फिफ्थ इंडेक्स, एंड स्टैक के अंदर लाइक कौन सा थर्ड इंडेक्स स्टोर्ड है, तो उस इसके और फिफ्थ इंडेक्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, फाइव माइनस टू। फाइव माइनस थ्री। देखो, जीरो, ये वाला जीरोथ इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है। तो थर्ड इंडेक्स पे जो हाइट है वो टू है, एंड फोर्थ इंडेक्स पे वन है, फिफ्थ इंडेक्स पे जीरो है, एंड सिक्स्थ इंडेक्स पे वन है। राइट? तो सिक्स्थ सिक्स्थ इंडेक्स, सिक्स को भी नहीं सेवन्थ को काउंट करते हैं। सेवेंथ इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स के बीच का डिफरेंस जो होगा, डिस्टेंस जो होगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, लाइक आई इज द करंट इंडेक्स की वैल्यू जो कि सेवेंथ इंडेक्स पर रहेगा व्हेन वी आर ऑन दैट इंडेक्स। एंड स्टैक डॉट पीक पे जो होगा वो होगा प्रीवियस हाइट, दैट विल बी थ्री। सेवन माइनस थ्री इज फोर, एंड सेवन जो है वो एक ज़्यादा ही काउंट कर रहे होंगे हम, तो उसके लिए माइनस वन कर देंगे, तो इट विल रिटर्न द डिस्टेंस बिटवीन द टू हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द वैली। मतलब लेफ्ट हाईएस्ट पॉइंट एंड राइट हाईएस्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रिटर्न करेगा, डिस्टेंस वैल्यू वैल्यू आई माइनस स्टैक डॉट पीक माइनस वन। ठीक है? एंड जो कि बाउंडेड हाइट है ना, एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे बाउंडेड हाइट। उसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, मिनिमम हाइट
के बीच का डिस्टेंस और जो टॉप पे जो हाइट थी उसके बीच का डिस्टेंस। मैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ क्या? एक काम करते हैं। The goal is to calculate how much water can be trapped in two non-negative integer representing wall height. The stack will only store the indices or the index of the heights in non-increasing order of height. अच्छा ठीक है, वी आर जस्ट स्टोरिंग द इंडेक्स। ये लाइन क्लियर करती जो मैं ठीक से बता नहीं पा रहा था कि अगर करंट हाइट जो है वो लेस देन और इक्वल टू हाइट एट द टॉप ऑफ स्टैक है, मतलब जो स्टैक पे हम स्टैक पे हम क्या कर रहे हैं, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाइट्स को स्टोर कर रहे हैं। अगर कोई भी हाइट प्रीवियस वाली हाइट से ज़्यादा अगर हमको मिलती है तो हम उसको स्टैक में डाल देते हैं, उसका इंडेक्स। ठीक है। तो अगर करंट इंडेक्स की हाइट स्टैक डॉट टॉप से ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास नई वैल्यू है। वैल्यू मतलब तो ओके बड़ी, काफ़ी टाइम से नहीं किया, अभी कर देता हूँ ना। बट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को मैंने शायद अपडेट ही नहीं किया है। कि आज क्या है, टू नंबर 35 स्टेज ऑफ द चेंजेस। डन। now you can see all the like मतलब मैंने VS कोड में जितने भी कोड डाल रखा है वो सब दिख जाएगा। गिटहब की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। एंड लेट्स सी द ड्राई रन। ड्राई रन के पहले कोड को देखते हैं इसके कमेंट्स के साथ में। एज लॉन्ग एज करंट वॉल इज टॉलर देन द लास्ट वॉल इन द स्टैक। int top is this stack that top no left boundary exists। मैं अभी तो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ इसको, समझ तो आ गया।
ट्रैपिंग रेन वाटर 3 अप्रोच कर लिए इसकी आज। हार्ड प्रॉब्लम। इट इज ऑलरेडी अपडेटेड, आई कैन सी इट। ये मैंने अभी अपडेट किया ब्रो, इसलिए दिख रहा है। नेक्स्ट क्यू के सब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या फिर ट्रैपिंग रेन वाटर के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखता हूँ, श्रद्धा दीदी ने एक्सप्लेन किया होगा अच्छे से। And talking about trapping rainwater problem, जिसका अप्रोच देखना है, श्रद्धा दीदी का वीडियो देखते हैं। हाय एवरीवन, अब इसके अलावा अगर हमें डीएसए का कोई और क्वेश्चन करना है तो वो हम ऑलरेडी हैव द हाइट ऑफ ईच बार, तो हम किसी भी बार के लिए सोच सकते हैं दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड ट्रैपिंग रेन वाटर एंड दिस इज प्रॉब्लम नंबर 42 ऑन लीड कोड। दिस इज अ हार्ड लेवल प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सवाल के अंदर बेसिकली हमारे पास इस तरीके का एक मैप गिवन है जिसके अंदर वी हैव इंडिविजुअल बार्स। ये जो सारे के सारे बार्स हैं इन सबकी हमें हाइट गिवन है इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर और एन एरे। तो ये हाइट हमारे पास इस तरीके से है एंड दिस इज द बार द हाइट्स आर फॉर्मिंग। अब क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि हमारी इस मैप के अंदर हमारी दिस इज द बार कितना मैक्सिमम वाटर है जो ट्रैप हो सकता है। जो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होगी जो ट्रैप हो सकता है इस बार के अंदर, उसे हमें रिटर्न करना है एज द फाइनल आंसर। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन का लॉजिक डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद वी समझना है नीचे हमारी मैप दैट वी आर गिवन। तो इसके अंदर वाटर ट्रैप देखते हैं। हमारे पास जो वाटर ट्रैप्ड होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ द बार्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वाले बार के ऊपर कोई भी वाटर ट्रैप नहीं हो सकता क्योंकि जितना भी वाटर होगा वो ओवरफ्लो हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। सेकेंड बार पर देखें तो हमारे पास इतना वाटर है जो ट्रैप हो सकता है। थर्ड बार को अगर देखें तो अगेन हमारे पास इतना वाटर है जो ट्रैप हो सकता है क्योंकि इससे ऊपर वाले लेवल पर अगर हम चले गए तो वो लेफ्ट की तरफ से स्पिल ओवर हो जाएगा। यहाँ पर देखें 3 पर तो हमारे पास इतना वाटर है जो ट्रैप हो सकता है। 2 पर देखें तो इतना वाटर है। 5 पर अगेन कोई एडिशनल वाटर नहीं है जो ट्रैप हो सकता है। तो इस तरीके से इस बार के लिए जो वाटर ट्रैप होगा वो होगा हाइट 2 का, प्लस यहाँ पर हाइट 4 का, प्लस यहाँ पर हाइट 1 का, प्लस यहाँ पर हाइट 2 का। तो फाइनली आवर आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 9। तो हमें इस 9 आंसर को रिटर्न करना है एज द फाइनल वैल्यू। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम 3 डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करेंगे, जिनमें से सबसे पहली होने वाली है हमारी नाइव या फिर ब्रूट अप्रोच। सेकंड अप्रोच हम एक बेटर अप्रोच डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद इसी बेटर अप्रोच को हम थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इट्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले बात करते हैं अपनी सबसे बेसिक नाइव अप्रोच के बारे में। बेसिकली लॉजिकली अगर हमें सवाल को सॉल्व करना होगा तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे करते हैं अपनी इस बेटर अप्रोच की विच इज ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेसिकली अपनी बेटर अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी लेफ्ट मैक्स एंड राइट मैक्स वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए नेस्टेड लूप का यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक सिंगल लूप लगाएंगे बिग ऑफ एन का एंड उसी में अपनी लेफ्ट मैक्स वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। उसी में सारे के सारे बार्स के लिए अपनी राइट मैक्स वैल्यूज कैलकुलेट इज लेस देन माय राइट की वैल्यू। तो 2 पॉइंटर अप्रोच से इस सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसका हम लॉजिक भी 2 पॉइंटर वाले अप्रोच तो होना था रखी है, स्टैक वाले अप्रोच है। So let's continue with our stack and cube playlist. Before starting off, hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So the problem that we will be solving today is trapping rainwater. So what is the problem stating? It's stating that you will be given an array of non-negative integers, where every integer is representing the height of a given building. The height can be 0. I also want to understand that solution clearly so that I can explain. Water, okay? मैं But भूल how गया much? वैसे, You जल्दी। can only store water from the height of the building, correct? So this was 2. So 2 minus the height of the building was 1. So it ended up storing 1 unit of water. So can I say minus the height of the building, which is array of right max? In that scenario, entire left arena, towards the entire left arena, the maximum is 4. So that ends up becoming 11 as peak of. What about the space complexity? I'm ending up, the formula that we were using was minimum of left max, comma, right max minus array of I. And this was for every building. And we ended up summing it up. Obviously, given that array of I has to be greater than left max and right max for it to have some water on the top of it. Okay. So now let's understand one thing. If you're standing at this particular building, you're at this building and the water is here. The water is here. Now, if you have to compute the units of water, there is something as left max, there is something as right max. But do I need the right max? Do I need the right max? No, because the units of water is 2 minus 1
where 2 is left max and 1 is array of I. I just need the left max. I just need the left max. I don't need the right max. And this is the intuition that I will be using. I know one thing for sure. I either need the left max or I either need the right max. I don't need both of them. I have one of them and the smaller one. The smaller one. This is very, very important. I always need the smaller one. Can have both. If I do a left scene, what is traversal to be 0? I'll initially and smaller. We cannot work on this one. Now I know this is smaller than this particular thing, which clearly gives us an idea that on the right, I have a taller building. On the right, I have a taller building for sure. Now what I need to do is figure out, do we have something on the left? Do I have something on the left? And I see that on the left, I still don't have anything. Thereby, I cannot store water in it. Hence, I will move. I'll go to the next. Nothing updated because it is 0. The left max doesn't get updated. Now I'm at this one. And I'm at this one. Both of them are same. Both of them are same. If both of them are same, I can straight away say that I'll probably work on L. You could work on R as well. You could do something on R as well. Doesn't matter. But I will work on the L. So if I still do is, you're at the nothing is greater than 1. You never saw a 2 because that will never happen. I'm traversing by making sure I always traverse through the smaller ones, So it will never happen that I'll traverse 2 first and the 1 will be left out. I repeat, it will never happen that I traverse 2 first and there'll be 1 left out because I'm traversing the smaller one first. You'll understand as I move forward. So I was 1. On the max is 1. Be sure. To the left, I move left. But then to the buildings on the left will be smaller. So it's just this one smaller, the right max. It's super simple. And it is on the right. I know for sure if thereby right, you'll be doing access, right? They're using any ones. Consider subscribing to us. And with this, I'll be wrapping up this video. Let's जो कुछ भी करते हैं स्टैक में क्यों डाल रखा है प्रॉब्लम Welcome to day 22 days equation. Today we're going to solve trapping rainwater. So we have array of integers. So this is the height of the bar. This is 0, then 1, then 0, and so on. So the output is 6. How? 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5, and 6. 6 units we can store. 6 is the output. Let's see how to solve this. We can use 2-pointer approach. One on the left side, one on the right side. What is left? So the best approach is 2-pointer approach. That is it. So हमने कर दिया already. I think 3 problems are enough for today. These 2 are easy. We can do tomorrow. And the remaining 6 problems we will do tomorrow. And I'm not like making it difficult for me. And I started the stream at 7:30, right? Not 7:30, but at 8 p.m. So it is already been 3 or 4 hours. So I'm just ending the live stream right now. And we will solve the remaining problems tomorrow of stack and queues. Okay. And if and see you guys tomorrow. You can join tomorrow. We will solve the remaining problems together. And thank you so much for joining me. And from today onwards, we will be consistently streaming daily. Okay. And in future, I will also bring some projects that I will stream live while making. Like I will live stream while making those projects. Okay. And one major project is Codecules itself. We will be building a platform for our community, and I will be sharing its code and complete process of making the project live on YouTube. So stay tuned, and thank you so much for joining us today. You guys are still watching. Yes, bro, I am in college. I myself is learning and preparing for placements. Like
And from which college you are, Zoro? What is your real name, by the way? Zoro. प्रोजेक्ट सबमिशन को अवॉइड करने का जुगाड़ देखो, मुझे लाइव रिएक्शन चाहिए फॉर व्हाट? अच्छा वो, अरे जोरो, आई थिंक you know Dipanshu Nayak. I think you are his friend. He might have suggested or shared my channel with you. Let's see what SG is saying. Project submission को avoid करने का जुगाड़. Okay, you are not in VTech. Then what? In which stream you are? I was also planning to get into MITS. Okay, MCA. That is cool. My friend is doing mathematics and computing from MITS. It's in the BTech stream. I am in seventh semester, bro. Seventh semester. Mm. Bye bye, guys. Mm, by the way, Zoro, तुमने नाम नहीं बताया तुम्हारा. What is your real name? See to the office of the principal teacher. The application confirms that waiver is. Oh, okay. Defense Cyber Agency during the period of 25th October to November. Justification for extension. Okay. Just call me Zoro. Okay, Zoro. Crazy. This kid is revealing all his information and wants reaction. I'm not giving you any reaction. Sorry. Okay, guys, thank you so much for joining. Good night. All the best for your future endeavors. And hope you stay consistent with your learnings and join me every day on my live stream. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Tomorrow, yeah, tomorrow. Thank you so much for joining. Bye bye.